गुड इवनिंग एंड वेलकम टू गनर शॉट। गनर शॉट में आप सबका स्वागत है। प्रणाम, वणक्कम और जय हिंद। आज हम जा रहे हैं रेड सी के अंदर। जैसे हमें सबको पता है कि उस इलाके में काफी अटैक्स हुए हैं। कुछ हमारे बोट्स के ऊपर भी, शिप्स के ऊपर भी अटैक हुए हैं। कुछ अंतरराष्ट्रीय शिप्स के ऊपर भी अटैक हुए हैं। अभी तक खास नुकसान नहीं पहुंचा। एक आध शिप को बंदी भी बनाया गया है एंड देयर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स हैपनिंग देयर। तो व्हाट आई विल डू इज टुडे, उसके बारे में हम बात करेंगे पहले, और उसके बाद जो भी आपके सवाल हैं किसी चीज के ऊपर, आप विल आई टेक इट ऑन। एंड मेरा यही है कि बहुत लोग लंबे चौड़े सवाल पूछते हैं कमेंट्स के अंदर। कमेंट्स के में मैं पूरा सबको आई कैन नॉट रिस्पॉन्ड, सो दिस इज द बेस्ट वे टू रिस्पॉन्ड इफ यू आस्क। ओके, फर्स्ट विल टैकल द रेड सी। What's happening in the Red Sea is something which needs understanding. First and foremost, you have to understand in the larger context. Larger context क्या है, बड़ा दृश्य क्या है? क्योंकि जब हम बड़ा दृश्य को समझेंगे तो छोटा दृश्य अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएगा। ये है ग्लोबल चोक पॉइंट्स। 10 चोक पॉइंट है। पनामा कैनाल, नंबर 2 स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, नंबर 3 केप ऑफ गुड होप, नंबर 4 बॉस्फोरस स्ट्रेट जो टर्की और को कनेक्ट करता है। ओके, और उसके बाद सुएज कैनाल, बाबल मंडब, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और स्ट्रेट ऑफ मालाक्का। ये स्ट्रेट्स हैं, और ये जो लाइंस दिए हैं उसमें कोर शिपिंग रूट्स हैं और सेकेंडरी शिपिंग रूट्स हैं, और इसके अलावा भी कुछ सेकेंडरी चोक पॉइंट्स हैं, बट उससे हमें आज के दिन तो लेना देना नहीं है। बट विल लुक एट द प्राइमरी चोक पॉइंट्स। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट जो एक लाइन लगाया मैंने, जो दुनिया के चारों तरफ घूम लो, तो पहला पनामा कैनाल, दूसरा जिब्राल्टर, सुएज कैनाल, बाबल मंडब और मलक्का स्ट्रेट। अगर ये चार अगर पकड़ लिया जाए, इसमें बाधा आ गया तो दुनिया में बहुत प्रॉब्लम होगा। ठीक, तो ये है, क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हम सब सोच रहे हैं कि रेड सी में, बाबल मंडप में ये सब पायरेसी या हौतीस वगैरह काम कर रहे हैं, पर एक्चुअल देखा जाए तो एक्शन कहीं और भी हो रहा है जो हमें पता नहीं है अभी, और उसके बारे में आज जिक्र करूंगा। वही फर्क है मेरे चैनल में और किसी के चैनल में। आप किसी चैनल में, मैं वादा करता हूं, जो मैं आज बताऊंगा आपको और कहीं मिले तो आप बात कर लेना, बता देना मेरे को। ओके, सबसे पहले देखो, दो थ्रेट है। एक तो ईरान का थ्रेट है और दूसरा है हौती का एक्शन। ओके, हौती क्या है, ईरान क्या है, ये हम आगे आज बताएंगे। राइट, सो द फर्स्ट थिंग इज दिस, ईरान का थ्रेट क्या है? ईरान हैज पुट आउट अ थ्रेट सेइंग दैट अगर ये इसराइल को लगाम नहीं लगाया तो वी विल स्टार्ट अफेक्टिंग द मेडिटेरेनियन, सुएज कैनाल, रेड सी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। उन्होंने इतने स्पष्ट तो नहीं बताया, पर उन्होंने बोला भाई हम मेडिटेरेनियन तक पहुंच जाएंगे। तो मेडिटेरेनियन का मतलब उनका, मेरे ख्याल में जिब्राल्टर तक तो नहीं पहुंचेंगे, पर डेफिनेटली अगर आप देखोगे इस मैप में, ईरान हैज द कैपेबिलिटी टू रीच अप टू मेडिटेरेनियन, एटलीस्ट नॉर्थ ऑफ सुएज। पूरा रेड सी के अंदर तो है उसका मार का इलाका, और बाबल मंडप में थ्रू हौतीस हैं,
और ये भी है मेडिटेरेनियन में थ्रू सीरिया। सीरिया में भी इसके शिया मिलिशियाज हैं, उसको भी कुछ देके कुछ कर सकता है। इराक से भी मार सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि ईरान अपने आप मारे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज तो उसके बगल में है, सो इट कैन इंटरफियर। अगर ये चार स्ट्रेट इस इलाके में बंद हो गया या इसमें बाधा आ गया, ग्लोबल ट्रेड बहुत डिसरप्ट होगा। मेडिटेरेनियन में खास करके यूरोपियन ट्रेड का बहुत, यूरोप अफ्रीका के बीच में जो भी होने वाला है उसमें बहुत बाधा आएगा। उसके साथ साथ हौतीस का एक्शन है। हौतीस कौन है? हौतीस जो है वो यमन, अभी देखिए यमन कहाँ है जहां वो दूसरा गोला लगाया, वो है यमन। यमन में ये रिबल है अगेंस्ट एस्टेब्लिश गवर्नमेंट। यहाँ सिविल वॉर चल रहा है पिछले 14 साल से, फ्रॉम 2014 ऑनवर्ड्स। जो जहां सऊदी अरेबिया हैज बीन ट्राइंग टू साइड द एस्टेब्लिश गवर्नमेंट, और रिबल्स यानी हौतीस को ईरान मदद कर रहा है, राइट। और यहां तक हौतीस और सऊदी अरेबिया के बीच में भी प्रॉब्लम हुआ है। ओके, सो यहाँ अभी ये छोड़ देते हैं, वापस आएंगे हम ईरान और हौती के कहानी के साथ साथ, पर आगे बढ़ेंगे। चोक पॉइंट्स पहले समझेंगे, ये बबल मंडप क्या है, कहानी क्या है, क्या हो रहा है उधर, फिर हम देखेंगे पॉलिटिक्स। ओके, ये है इस इलाके का एक स्नैपशॉट, राइट। अगर हम नजदीक से देखेंगे तो आप देखिए ऊपर जो है सुएज कनाल है, नीचे बाबल मंडप है। बाबल मंडप वो है जिबूती और यमन के बीच का इलाका, राइट। ऊपर स्ट्रेट ऑफ हर्मुज है। ये तीन यहाँ जहाँ लड़ाई हो रहा है, और सुएज कनाल के बगल में इसराइल है, और जहाँ अभी इसराइल और हमास का यू नो वॉर हो रहा है। रेड सी का क्या मायना है? दिस इज इंपॉर्टेंट। रेड सी इज एन एंट्री वे टू द सुएज कनाल। अगर पूरा जैसे पहले इसमें दिखाया, अगर कोई सामान यहां से लेकर यूरोप जाना है थ्रू सुएज कनाल, तो थ्रू बाबल मंडप जाना पड़ेगा, और उल्टा भी। इट्स अ वर्ल्ड की ग्लोबल ट्रेड कॉरिडोर, one of the key trade corridors. It carries 12% of global trade. One third of global container traffic goes through Suez Canal and Bab el Mandeb. 19,000 ships cross Suez Canal annually, और तकरीबन उतने ही बाबल मंडप को भी पार करते हैं। इसका मतलब रोज, हर रोज आप मान लीजिए 50 से 60 शिप जो है यहाँ घूम रहे होते हैं, बड़े बड़े कंटेनर दोनों तरफ, राइट। सो ये जो, अगर ये बंद हो गया तो सबको प्रॉब्लम होगा। ओके, बाबल मंडप को ये भी बताया जाता है इट्स द गेट ऑफ ग्रीफ। ओके, इसमें जो ये बाबल मंडप है, इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी बोलते हैं। ये जो जिबूती में जो एक राइनोसरस हॉर्न की तरह है, सींग की तरह, उसका हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी बोलते हैं। सोमालिया, जिबूती, वो इलाका, वहां ये जो पानी है, इट कनेक्ट्स द ईईजेड ऑफ जिबूती, यमन एंड सोमालिया। आप देखिए जिबूती, यमन और सोमालिया का जो ईईजेड, राइट, इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन, वो गल्फ ऑफ ईडन में है। गल्फ ऑफ ईडन कहाँ है? जिबूती के या बबल मंडप के पूर्व दिशा में, ठीक। अच्छा, द इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन्स ऑफ एरिट्रिया जो वेस्ट में है, यमन, सुदान, सऊदी अरेबिया एंड इजिप्ट आर इन रेड सी। तो ये बबल मंडप का कनेक्शन है इनका इकोनॉमिक जोन्स को कनेक्ट करना भी। तो इनके खुद के जो अंदरूनी इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन में
एक एक्टिविटी होता है, ये भी बाबल मंडप उसके ऊपर हावी है। सो बाबल मंडप is also known as the gate of grief. It is also known as the great gate of tears. रोना, ठीक, दुख भरी गेट है ये, क्योंकि हिस्टोरिकली यहाँ वाद विवाद चलता रहा और लड़ाई चलता रहा, और ये कोई नई चीज नहीं है जो आज हो रहा है। ओके ओके, अभी बाबल मंडप का क्या कहानी है ये भी हम थोड़ा देखेंगे। बाबल मंडप का जो पूरा विड्थ है सिर्फ 44 किलोमीटर है। ये तो ठीक है, 44 किलोमीटर तो आप हम बोल सकते हैं, पर एक्चुअल जो है कम है। क्यों? वहां अगर आप देखेंगे बाबल मंडप में बीच में, राइट, वाटरवे के बीच में एक टापू है, एक आइलैंड है जो ईरान की तरफ है। उसको कहीं मैप्स में मयून भी लिखते हैं, कई मैप्स में पेरिन भी लिखते हैं, राइट। तो इसका मतलब बबल मंडप में दो चैनल हैं, एक है साउथ चैनल और एक नॉर्थ चैनल। साउथ चैनल तकरीबन 20-25 किलोमीटर का चौड़ाई है, और नॉर्थ चैनल सिर्फ 2-3 किलोमीटर का चौड़ाई है। वहां से कोई इंटरनेशनल ट्रैफिक नहीं जाता, पूरा इंटरनेशनल ट्रैफिक साउथ से ही जाता है। और बीचों बीच, रेड सी के बीचों बीच आने से ये जो कंटेनर ट्रैफिक एक एक ऑलमोस्ट एक पटरी पे चलता है। इसका मतलब सबको पता है कि ये बड़े बड़े जहाज लेफ्ट राइट नहीं जा सकते, उसी पटरी में आना है उनको। जब उस पटरी में आना है और इंटरनेशनल ट्रैफिक है, सब सुएज कैनाल में जो पार होता है वो तो यहाँ जाएगा, और यहाँ से जो जा रहा है सुएज कैनाल तक जाएगा। और सुएज कैनाल में क्योंकि वहां लाइन लगता है, कतार लगता है, तो सबको पता है कौन सा हवा जहाज कहाँ जा रहा है, सबको पता है, इट्स कॉमन नॉलेज। सो कोई ये ऐसा नहीं हो सकता कि आप इंटरनेशनल वाटर में बिना फ्लैग के जा सकते हो, और सारे जहाज इसी 20 किलोमीटर के पटरी में जाना है कंस्ट्रक्शन में। सो देयर इज अ होल लॉट ऑफ थिंग। इसीलिए अगर आपको याद है कुछ दिन पहले सोमालिया में ये पायरेट्स को पायरेसी होता था, और पायरेट्स जो है, जब सोमालिया में सिविल वॉर हो गया और वहां प्रॉब्लम हो गया, ये पायरेट्स जो है ये शिप्स को ले जाके वहां लगा देते थे। वहां पुलिस पुलिस कुछ नहीं था, तो वहां से ये रैंसम मांगते रहते थे, और कहीं ये हो नहीं पाया। पर जब सोमालिया में थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर हो गया तो पायरेसी भी कम हो गया, राइट। अभी यमन में हालत ये है कि वहां सिविल वॉर चल रहा है, और हौतीस का एक राज है, और वो क्या है, ईरान के अंडर है, ईरान बैक्ड है। और उन्होंने क्या किया है कि वो बोलते हैं कि इसराइल को नष्ट करना चाहते हैं और हमास को फायदा करना चाहते हैं। यहां तक हौतीस ने अपने इलाके से इसराइल तक एक मिसाइल भी मारा है, गिरा कहीं और वो तो अलग बात है, पर उतना इनका सोच है। और उन्होंने अभी ये ऐलान कर दिया है कि जो भी शिप इसराइल का है या इसराइल बैक कंट्रीज विच बैक इसराइल, उसको हम बाधा डालेंगे। कंट्रीज लाइक रशिया, चाइना, ईरान, इनके शिप्स जा रहे हैं, इनको छोड़ रहे हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं है। सो दिक्कत बेसिकली वेस्टर्न शिप्स, और अभी ये इंडिया के साथ भी शुरू हो गया, राइट। ये चैलेंज है हमारे लिए। आगे क्या होगा अभी देखेंगे, क्या क्या विकल्प है वो देखेंगे। ओके, तो ये जो जैसे मैंने बताया आपको कि देखिए मैप नजदीक से, तो चैनल जो सेंटर लाइन में है वो दुमेरिया है, एक छोटा आइलैंड ऑफ एरिट्रिया, और फेरिम एक आइलैंड है, वो है बाबल मंडप। तो शिप्स हैव टू फॉलो दिस रूट। तो अगर शिप्स हैव टू फॉलो दिस रूट ओवर 40 किलोमीटर चैनल बीचों बीच, तो यमन के तट से सिर्फ 20 किलोमीटर की रेंज अगर कोई मिसाइल है तो आप किसी शिप को मार सकते हो, राइट। और
पेरिम के नीचे देखिए सेवन ब्रदर आइलैंड है, तो वहां भी चैनल कंस्ट्रिक्ट हो जाता है। वो चैनल जो है घूम घाम के आता है, वो स्ट्रेट नहीं है। और बड़े बड़े शिप हैं तो घूम घाम के आते हैं, कुछ प्रॉब्लम होता है नहीं होता है तो उनको दिक्कत है। प्रिडिक्टेबल है वहां, वहां ओपन सीज नहीं है, इट इज प्रिडिक्टेबल। ओके, राइट। अभी ये है मैरिटाइम इंसिडेंट्स। पिछले एक महीने से, जब से ये इसराइल का लड़ाई शुरू हो गया, तकरीबन इस महीने का तो ये 15 इंसिडेंट्स हो गए। ये अगर हम मैप देखेंगे और आप अगर आप जाओगे मैरिटाइम इंसिडेंट्स में, आपको मिल जाएगा कितने कितने कहाँ कहाँ हुए हैं और कौन कौन से शिप कहाँ कहाँ हुए हैं। वो बीच में देखिए चैनल है, चैनल में ही ये मार रहे हैं। ये क्या, किस टाइप का थ्रेट्स हैं वो इधर? सोमाली पायरेट्स विद स्किफ्स, मशीन गन्स, रॉकेट आरपीजीज। स्किफ्स का मतलब छोटे नाव, वो नाव के साथ आ जाते हैं। शिप में, एक कंटेनर शिप में लोग कम होते हैं और उनके ऊपर हावी हो जाते हैं। हौतीस क्या है? दे यूज एक्सप्लोसिव इक्विप्ड यूएवीस, राइट। यानी कि कोई भी ये यूएवी ले लो, उसके अंदर एक्सप्लोसिव भर दो और उसको ठोक दो। एंटी शिप क्रूइज एंड बैलिस्टिक मिसाइल्स, ये इनके पास है। क्रूइज मिसाइल भी है इनके पास, हौतीस के पास। और एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं दोनों, पर उतना इफेक्टिव नहीं है। ये कोई प्रिसिशन नहीं है, ये वगैरह नहीं है। ये टेक्नोलॉजी इनको मिला है ईरान से। कब मिला इनको ईरान से? जब इन्होंने सऊदी अरेबिया के साथ लड़ाई शुरू किया। आपको याद है तो 2018 में अरामको ऑयल फील्ड्स के ऊपर, 8 ऑयल फील्ड्स के ऊपर अटैक हुआ है, यूएवीज और मिसाइल्स के साथ। और लोग कहते हैं ये हौती एरिया से आया है, पर मेरा मानना यह है कि हौती एरिया से आया होगा। और पर क्या है कि अ, ईरान इनको बैकिंग किया है, तभी इनको उतना एक्यूरेट फायर, कारगर फायर लाके वो अरामको ऑयल फील्ड्स में, 2 ऑयल फील्ड थे, एक अबुकेक और दूसरा मेरे को याद नहीं है, उनको ठोक दिया। और 2 महीने के लिए वो ऑयल फील्ड्स बंद रहे। पर यहाँ उतना इनको सक्सेस इसीलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि नाव हिलता रहता है पानी में, तो टारगेट करना मुश्किल है। और नाव तो चलता रहेगा, सो इट्स अ मूविंग टारगेट, सो इट्स नॉट सो एक्यूरेट। एक्यूरेसी उतना है ही नहीं। ओके, उसके अलावा ये हेलीकॉप्टर बोर्न सीजर ऑफ मर्चेंट शिप भी एक किया है। यानी कि हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर में आओ, कमांडो टाइप एक्शन करो, शिप के इसको पकड़ लो और उसको रैंसम मांगो। एक शिप मेरे ख्याल में हुआ है, वो उसका नतीजा मेरे को, मैंने ट्रैक नहीं किया। तो इसके अगेंस्ट एक ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन, जिसमें बहरेन, कनाडा, फ्रांस, ग्रीस, इटली, यूएसए, नेदरलैंड्स, नॉर्वे, सेशल्स, स्पेन, यूके, ये सब मिलके ये ऑपरेशन चला रहे हैं। इस ऑपरेशन को चलाने में भी इनको प्रॉब्लम है क्योंकि लोग नहीं चाहते कि दिस होल स्टोरी वर्क्स अंडर द यूएस फ्लैग। दे वांट दिस टू गो अंडर द यूएन फ्लैग और अंडर अ प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन, लोकल जो भी है, एज अ कंबाइंड आर्म्स फोर्स। क्योंकि लोग जो है ना बोलते हैं कि नहीं, अगर यूएस फ्लैग के अंदर अंडर काम किया तो यूएस का जो एक्शन है, जो यूएस इंटरेस्ट विल ओवरटेक एंड इट विल नॉट बी टू इंटरनेशनल इंटरेस्ट, सो पीपल हैव हेजिटेशंस। तो ये भी फर्मेन नहीं हुआ है, बट ऐलान तो हो गया कि प्रॉस्पेरिटी गार्डियन ऑपरेशन जारी होने वाला है। सो सम एक्शन विल बी टेकन। ओके, बिफोर आई गो फर्दर, राइट, ये भी मैं बताना चाहता हूं पहले सोमाली पायरेट्स को कैसे डिफीट किया गया था। मोस्ट ऑफ द कंटेनर लाइंस
या शिपिंग लाइंस कंपनीज, इन्होंने क्या किया है, प्राइवेट गार्ड्स को हायर करना शुरू कर दिया। जब से प्राइवेट गार्ड्स को हायर करना शुरू कर दिया, ये जो भी जहाज नजदीक आता था उसके ऊपर चेतावनी देते थे कि आप इससे ज्यादा नजदीक आओगे तो हम फायर कर देंगे। जैसे आर्म्ड गार्ड्स कंटेनर शिप्स के ऊपर आ गए तो पायरेसी थोड़ा कम हो गया। पर आर्म गार्ड्स के जरिए ये यूएवीज को क्या करोगे आप? ये बड़े बड़े शिप जो है ना, वो नेट भी फेंक देते थे छोटे शिप्स के ऊपर, और या वाटर कैनन्स इस्तेमाल करते थे और बचा लेते थे। तो अभी ये है काउंटर यूएवी सिस्टम्स और काउंटर मिसाइल्स सिस्टम्स लगाना शुरू कर देंगे। महंगा होगा बट करना पड़ेगा। अगर ये नहीं हुआ तो दे हैव टू गो अराउंड द हॉर्न ऑफ अफ्रीका, द साउथ सदर्न टिप ऑफ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, केप ऑफ गुड होप के जरिए। उससे क्या है कि 10 दिन और टाइम लगेगा और द सप्लाई चेन्स विल गेट ब्रोकन, खत्म हो, ब्रोकन तो नहीं, मतलब दे विल गेट डिसरप्टेड, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ओके, तो ये फोर्स हो रहा है, इट्स बीइंग फोर्स, दिस इज पार्ट ऑफ Houthis are forcing all this action. Okay, Houthis का एक्शन क्या होता है? What is Houthis, इनका टैक्टिक्स क्या होते हैं? ये मैंने एक वेबसाइट में देखा। Houthis attacks are typically salvos of 15 to 20 UAVs over 2 hour period. यानी कि नाव जा रहा है, ये 2 घंटा उस नाव के ऊपर अटैक करते हैं 15 से 20 यूएवीज के साथ। जो लगा वो सही है। ओके, मिसाइल अटैक्स आर अनगाइडेड शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स। क्योंकि अनगाइडेड है, ये ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। नाउ टू सक्सेसफुली हिट लार्ज कमर्शियल वेसल्स, Houthis follow 3 steps. They stop the vessel by threatening it over the radio or by targeting with missiles or drones. तो पहले कोशिश है कि वो रुक जाए। एक बार वो रुक गया तो टारगेट इजी बन गया। Once the vessel is stopped or moving at slow speed, they get its coordinate via spotting UAV. Then they launch the SRBM as the vessel using fixed coordinates, right? Or as they would against a fixed land-based target, right? एक बार वो जहाज स्लो हो गया या रुक गया तो फिर नॉर्मल तरीके से एंगेज करते हैं। पर क्योंकि जो शिप है, कोई भी शिप, बड़ा छोटा भी है, वो रुक भी जाएगा तो पानी में हिलता रहेगा, ड्रिफ्ट होता रहेगा। तो इसीलिए शिप के अगेंस्ट ये मार गिराना थोड़ा मुश्किल है। एक आध शिप में लग सकता है पर उससे ज्यादा हो नहीं पाता, राइट? अभी ये देखिए प्रॉब्लम क्या है इसमें। यमन, ये जो यमन का मैप देखिए, इसमें जो लाल इलाका है, जो वहां सेंटर हुदैदा है, वो है हौती कंट्रोल्ड एरिया। अब वापस जाइए, मैक्सिमम देखो कहाँ अटैक हुए हैं, उधर ऊपर रेड सी के अंदर। कुछ तो नीचे भी हुए पर मैक्सिमम वहां हुए। तो हौती कंट्रोल्ड एरिया से ये पूरा कहानी चल रहा है। ओके, तो अभी देखते हैं क्यों हम हौती के ऊपर इनको एंगेज नहीं कर सकते। अगर हम, या हम मतलब यूएस या कोई भी, यमन के ऊपर अगर अटैक हो गया है, एक तो यहां जो इजराइल हमास वॉर फैल जाएगा, द वॉर विल एक्सपेंड। ओके, दूसरी बात यह है कि पिछले 6 साल से ये कहानी चल रहा है बिटवीन यमन और सऊदी अरेबिया। अभी पिछले 1 साल से इनका ट्रूस हुआ है कि भाई ठीक है, सीज फायर हुआ है। अगर यूएस ने फायर करना शुरू कर, किसी ने भी इनके ऊपर फायर करना शुरू कर दिया, वो पीस टूट जाएगा। सऊदी अरेबिया के साथ लड़ाई फिर छिड़ जाएगा। फिर तो इजराइल हमास वॉर और यमन और सऊदी अरेबिया का भी शुरू हो जाएगा। अगर ये शुरू हो गया
तो ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में जो अभी नॉर्मल सी थोड़ा बहुत आया है, उसमें भी प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसीलिए आज तक यूएसए ने हाउथीज को अटैक नहीं किया, या किसी ने, और हाउथीज को पता है ये बात। अभी आप पूछोगे ये जो हमारे शिप जो पोरबंदर के वेरावल के पास इन्होंने मार गिराए, आप देखिए ये इसमें मैं समझाता हूं आपको अच्छी तरीके से। यमन कहाँ है और वो रेड डॉट कहाँ है? वो रेड डॉट वो इलाका है अबुबेक, जहां इन्होंने 3 साल पहले 4 साल पहले, ये अरामको ऑयल फील्ड है वहां जहां इन्होंने मारा था। 1,500 किलोमीटर उतना ही डिस्टेंस आप लगा दो तो पोरबंदर तक आ जाएगा, यानी कि वेरावल के आउट हमारा ईजेड के बाहर जो कैंप प्लूटो को लगा है, राइट। सो और ये लग गया, पर ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, वही अच्छी बात है। तो ये लगाएंगे, राइट। सो ये होने वाला है, और ये हौतीस जो हैं ये पॉइंट को ये डेफिनेटली ये दे विल एक्सप्लॉइट एंड कंटिन्यू। तो रही बात करना क्या है, इनके साथ करना क्या है, ठीक। सो वी हैव टू कम टू अंडरस्टैंडिंग। मेरे हिसाब से इंडिया हैज टू बी पार्ट ऑफ दिस प्रॉस्पेरिटी गार्डियन, नहीं तो ये जो भी हमारा जहाज है इसके ऊपर मार देंगे। हम इंडिपेंडेंटली उचित नहीं है कि हम हौतीस की लड़ाई में जाके घुस के शुरू हो जाए। So either under UN Charter or under a combined coalition force or something like that, we have to start and we have to this thing. साथ साथ ईरान के साथ भी बात करना अनिवार्य है अभी, और मेरे ख्याल में ये तो शुरू हो गया होगा। बट ईरान के साथ भी बात करो कि भाई हमारा क्या लेना देना है इससे, ओके। पैलेस्टीनियन से भी बात करो और बोलो कि भाई इनको बोलो चुप रहे। सो वी हैव टू फाइंड वाया मीडिया करना क्या है। And if you are part of the coalition force, do what you want. Till then, deploy the Indian Navy and carry on what you are supposed to do. Right? प्रॉब्लम यहाँ हल नहीं होता। यही बात मैंने पहले भी बताया था, अभी बता रहा हूं। हम अभी चलेंगे पनामा कैनाल। देखिए, मैंने पहले दिखाया ना आपको, या ये देखिए, अभी आज के दिन पनामा कैनाल में भी प्रॉब्लम है। ये पहला वाला नंबर 1 पनामा कैनाल, उसमें भी प्रॉब्लम है, राइट। दो मेन, बाकी तो नहीं है, पर पनामा कैनाल के जरिए जो भी आ रहा है थ्रू मेडिटेरेनियन और थ्रू सुएज कैनाल, बाबल मंडप में जाना ही जाना है। अगर ये दोनों रोक दो, बाबल मंडप और पनामा कैनाल में अगर अड़चन आए, ग्लोबल ट्रेड काफी प्रॉब्लम आ जाएगा, ओके। और तीसरा, अगर मलक्का स्ट्रेट में भी कुछ हो गया तो मान लो कलबली मच जाएगा दुनिया भर में। तो पनामा कैनाल की ओर चलते हैं, वहां क्या कहानी हो रहा है, वहां क्लाइमेट चेंज का कहानी हो रहा है, ओके। ये है पनामा कैनाल, कुल 82 किलोमीटर्स, ओके। पनामा कैनाल जो है पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन का कनेक्शन है। और ये देखिए, पनामा कैनाल जो है काफी हद तक कैनाल है, पर वहां एक लेक गटून है। ये लेक गटून के थ्रू जाके फिर आगे निकल जाता है। और इसमें क्या है, पनामा कैनाल का बनावट ऐसा है कि लेक गटून के पानी लेकर ये पनामा कैनाल में भरा जाता है और नाव चलते हैं। ये नहीं कि सी वाटर गोज इनटू द पनामा कैनाल, इट्स द वाटर ऑफ लेक गटून which is dropped into the Panama Canal for ships to go through. क्योंकि लेक गटून is at a height, the sea is at a lower level, so the ships are taken over this एक अच्छी तरीके से, इसको मैं 2 मिनट में बता दूंगा। तो ये है पनामा कैनाल, आप देखिए लॉक्स हैं इधर, अलग अलग लॉक्स। तो क्या होता है कि यहाँ देखिए, ये अलग अलग हाइट्स में है,
तो क्या होता है, जब शिप ऊपर होता है, यानी कि मान लो शिप नीचे है, सबसे नीचे है, तो उसमें पानी भरा जाता है, तो शिप ऊपर आता है, फिर सेकंड लॉक में आता है, फिर सेकंड लॉक में पानी भरा जाता है, वो थर्ड लॉक तक आ जाता है, फिर ऊपर पानी भरा जाता है, फिर फर्स्ट लॉक में आता है और आगे चलता है, और उल्टा होता है। ये सिस्टम पनामा कनाल का बहुत अजीब सिस्टम है। और ये लॉक्स जो है, ये है लॉक्स, जिसमें देखिए डिफरेंट लेवल में है यहाँ। आप देख सकते हो इस पिक्चर में, डिफरेंट लेवल में है ये लॉक्स, जहाँ पानी भरा जाता है, और ये गेट्स ऊपर नीचे करते हैं, फिर शिप्स आगे ऊपर नीचे जाते हैं। एंड में देखिए वो कैनाल, जहाँ पानी पूरा है, वो कैनाल आगे निकल जाता है। पर जहाँ हाइट डिफरेंशियल करना है, लिफ्ट करना है शिप को, या नीचे लाना है शिप को, लॉक्स के जरिए करते हैं। जो पानी घटुन लेक से आता है, ओके, अभी दोबारा वापस, तो ये देखिए लॉक्स, लॉक्स जो है ऊपर है और नीचे है, दो जगह है। और ये पानी जो है घटुन लेक से आता है। प्रॉब्लम क्या है यहाँ? प्रॉब्लम है क्लाइमेट चेंज की वजह से वहां एक अकाल पड़ा हुआ है और पानी नहीं है, पानी घट गया है उधर। इसी साल, पिछले साल कितना पानी था लेक घटून में, और इस साल अभी क्या है, इस ग्राफ से नजर आ रहा है। वहां पानी घट गया है, वहां पानी घट गया है, तो शिप मूवमेंट वहां कम हो गया है। तो आप सोचो, बड़ा सिंपल है, आप सोचो, पनामा कैनाल में मूवमेंट जो है, पानी की कमी की वजह से शिप मूवमेंट कम हो रहा है। बाबल मंडप में हौतीस की वजह से शिप मूवमेंट कम हो रहा है। राइट, ओवरऑल क्या होगा? ग्लोबल ट्रेड विल सफर, देयर विल बी डिसरप्शंस इन सप्लाई चेन्स। सब, अगर पनामा कैनाल के चारों को पार करना है, तो साउथ अमेरिका के से जाना पड़ेगा। आपको बबल मंडप छोड़ना है, तो अफ्रीका के नीचे से निकलना पड़ेगा। राइट। अब दोबारा मैं आपको चाहिए तो फर्स्ट मैप दिखाता हूँ, दुनिया का मैप, आप उससे आपको क्लियर हो जाएगा मैं क्या कहानी बता रहा हूँ मैं। और ये कहानी मेरा नहीं है, ये ये ऐसे ही निकला हुआ है। और ये टाइम है, ये देखिए। राइट। सो देयर इज अ मेजर मेजर प्रॉब्लम टुडे। अगर ये सॉर्ट आउट, अगर पनामा कैनाल में बारिश आ गया और लेक गटोन में पानी भर गया, तो फिर ठीक है, एक साइड हल जाएगा। पर बबल मंडप में ये नहीं हुआ तो प्रॉब्लम चलेगा। और ऐसा लग रहा है कि ये प्रॉब्लम उतना आसानी से बंद होने वाला नहीं है। तो ये है पूरा कहानी रेड सी का। आगे आगे देखते हैं क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो राइट, तो मेरा पूरा प्रेजेंटेशन इसके बारे में मैं यहाँ बंद कर देता हूँ। ये है, आगे देखते हैं क्या होगा। ओके, ईरान के साथ कैसे निपटना पड़ेगा और वगैरह वगैरह। पर ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो दृश्य अच्छा नहीं है। अगर ईरान हमस वार चलता रहा और ये अटैक्स चलते रहे, और और कभी भी बड़ा वॉर छिड़ सकता है। एक, दूसरा, हमारा शिपिंग इज एट रिस्क, ग्लोबल शिपिंग इज एट रिस्क, एंड ग्लोबल सप्लाई चेन्स आर एट रिस्क, एंड मेनी मोर। So, but let's see how the situation unfolds. Right. So, with this, I'll take a few questions, and let's see what are the questions. Okay. So, the first question is, how do we balance our relationship with Iran given we have Shritik? Just wait till आज 25 है, 28 को हम ईरान के बारे में बात करेंगे। आई एम गेटिंग कर्नल राजीव अग्रवाल, जो आईडीएसए में है और वो मिडल ईस्ट एक्सपर्ट हैं, पहले भी आ चुके हैं। वो 28 को आके बात करेंगे। राइट। हम फिर डिस्कस करेंगे कि करना क्या है इसराइल के साथ, आई मीन ईरान के साथ, क्योंकि इस इलाके में
अभी इसराइल का काफी कहानी ओके भी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर भी ईरान से ही या जाता है, तो विल सी क्या हो, उसका कुछ नहीं होगा अभी, क्योंकि वो चला ही नहीं आज तक। या वाई जंग जयशंकर गोस टू जी, रशिया में 5 दिन क्या गए हैं। देखिए, रशिया के साथ बहुत है इश्यूज जो हमें सॉर्ट आउट करने की जरूरत है, ठीक, क्योंकि रशिया का गठबंधन अभी ईरान, रशिया, पाकिस्तान, चाइना और नॉर्थ कोरिया के साथ है, और हमारा प्रॉब्लम उस गठबंधन में पाकिस्तान और चाइना के साथ है। तो इसमें हमें लाइन्स क्रॉस होना मुश्किल आसान है। वी माइट वी हमारा जो संबंध रशिया के साथ स्ट्रेन हो सकते हैं। तेल ले रहे हैं हम, हमारा अभी तक कुछ डिलीवरी नहीं हुआ है एस फोर 400 का, और कुछ हवाई जहाज भी डिलीवर नहीं हुए, पार्ट्स वगैरह। ये बहुत चीजें हैं हमारा और रशिया के संबंध के बारे में। तो ये सब सॉर्ट आउट करने के लिए गए हैं, और उनको भी गलत फहमी नहीं होना चाहिए रशिया को, जिस तरीके से हम यूएसए के साथ व्यवहार कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं मेरे ख्याल में जयशंकर जी जाके ये बात भी उठाएंगे, जो हमारा शिपिंग के ऊपर अटैक हो रहा है, और रशिया बताएगा ईरान को या चाइना को, जो भी है वो। तो बहुत चीजें हैं जो जयशंकर जी ने रशिया के साथ सॉर्ट आउट करना है। Okay, if China's GDP is vastly overestimated, as you and others claim, why isn't there any noise from global rating agencies? Purely something like this is of significance to investors. ये आपने सही बताया राहुल, कि ये this is of great significance to them, but they'll not talk because money is invested in China. Okay, if they talk against China and the shares go down tomorrow, then their money is gone. Okay, so they are just keeping quiet at this point of time. The latest inputs are there's no FDI going into China. The amount of FDI which is going into China has reduced. In fact, in the last financial year, the amount of FDI into China vis-a-vis rest of Asia has reduced for the first time in about 15-20 years. Earlier, it used to be to the order of magnitude of 2 to 3. Investment into China divided by 3 was what was going into rest of Asia. Today, rest of Asia is getting more investment than China. So there is logic in all this, what is happening. That's why no one is talking, but everyone knows about this. Yeah. Okay. If their GDP is overestimated, how are they able to spend so much on defense and infrastructure? Look, they don't have to. I'll give you an example. 62, 63, 64. We were spending 3% of our GDP on defense. At that time, we didn't have money. We were a poor country, but did it stop us from spending on defense? No. So similarly, spending on defense for a country is not an issue if it has to cut corners elsewhere. Okay, and it's not taking debt from anywhere. It's all internal debt, so it can manage. The problem for them is something else. That debt is not for this. That debt is for bonds which have been given out. People, debt, local debt and federal debt of China is by they've raised the debt through bonds. Now those bonds have dollar denominated bonds, which means they have been sold in the international market, and many bonds have been sold in the national market. Like you can go and buy RBI bonds tomorrow. Similarly, people can buy because they are at some fixed rate of interest. The issue is default. If they cannot repay bonds, there's a problem. As of now, they're struggling to repay this dollar denominated bonds, and they're converting local debt into other instruments. How far can they do it is a question. But affording defense expenditure is not a problem. They'll continue. Your take on the Rajouri terror attack and aftermath. Look, I will not talk of it now because I'll do a full program on it. Okay.
Now, the attack has happened. They have achieved surprise. We have lost people. Obviously, there's local anger in the army. What they've done or not done, we don't know. But some videos have surfaced. Some people say that videos are of old vintage. So the army has removed that commander out there. It's a good thing to do. Take him out, put a new person, conduct an inquiry, and then deal with him accordingly. Okay. Fingers will always point towards the army, but that's okay. ये पहली बार तो है ही नहीं, और ये एक फर्स्ट टाइम नहीं है. So there's no problem. I I would say, don't unnecessarily get worked up about it. Okay. What's the possibility of this attack by Pakis and us as we decline to join? No, this has got nothing against that connection, and this is completely different. Why should we decline to join the US-led coalition? US-led coalition, everyone is declining to join. They want an international coalition under international norms, not under US-led norms. US can lead that coalition. We don't have a problem, but it has to be a coalition. It has to be under a common minimum program. So then we'll see what happens. Okay, it's too early. It's nothing as अभी तक तो बात ही चल रहा है उसके बारे में. How these actions by Houthis affect Indian economy? Oh, don't worry, nothing will happen. No, this thing. How badly global trade is going to be affected? See, it depends on how much you can control the situation. Panama Canal has definitely going to affect the thing because it's a matter कि पानी नहीं है उधर. There's just no water there. I've shown you that graph. So tonnage going through Panama Canal has reduced because unless you have full water capacity, the ships won't rise. You see, fully laden ships don't rise. As far as the Bab el Mandab is concerned, if the Houthis are so far, it has not affected too badly, but a lot of ships have started rerouting through South Africa. So it's going to be, yeah. How good is Turkey's navy? Turkey's geography is, Turkey's geography is very crucial. Turkey's geography is crucial to Bosphorus, to the north, not to the south. Right? They don't have that much capability to operate to the south. In any case, the US is there and Red Sea doesn't affect Turkey. So Turkey doesn't have any play in this actually. Does Oman have any leverage over Yemen? Yeah. Saudis don't have because Saudis are party to the dispute. Oman has. I'm sure we are operating through Oman because we have very good equation with Oman. Oman का जो head है, president अभी आया था, and we have a strategic partnership with Oman from long. In fact, Oman has been one of our most, steadfast partners. So, who gives free hand to Houthis? Iran. Okay, that's the next thing. Okay, good evening, General Shah. We showed both of our aircraft carriers on the sea a few months ago. Does it need to be repeated and make a safe convoy? See, at this point of time, nothing is needed because you must remember, US has got enough aircraft there. It has in Bahrain, it has in Oman, it has in Qatar, and if needed, it will use Saudi Arabia. So we don't need to go there. We don't need to put our aircraft carrier. There's one aircraft carrier of USA already there. USA has a base in Djibouti. In Djibouti, it has a base. So it's not needed. But if we have to go, we'll go. That's the thing. But let us come to some modus vivendi. कि करना क्या है उधर? Do we have a role to play? Do we have a role only in the Arabian Sea? So this thing will get sorted out and then we'll act accordingly. China's GDP is, I agree with you. I agree with whatever you're saying, Adil. Definitely, look, the GDP numbers I don't doubt, but they have led a lot of dead GDP. The dead GDP is that GDP which is in the property sector and the infrastructure sector. They're putting money into it, so it's of no use. See, if you move from one place to the other and come back, it is GDP. You can count it
as GDP. They're doing that. So they're just ratcheting up the numbers. It's not useful GDP. That's the thing. What is Sino Wahhabi who are involved in it? Sino Wahhabi are very simple. This is the equation between uh, Saudi Arabia and China. They have a good equation. As simple as that. What makes Indian military leadership so efficient as compared to other domains in India? Discipline, tradition, ethos, training, a political behavior, right? And tremendous experience, well set traditions. Okay. We have, and we operate by the Constitution of India. That's what makes us efficient. We don't, tolerate anyone violating the Constitution. Discipline also. हर कोई सोशल मीडिया पे स्टैंड विद पैलेस्टाइन करता है. Why not stand with Armenia, Libya, Yemen? Why so discrimination? I agree with you. It's a matter of choice. It's a matter of who wants to stand with whom, right? Uh, Armenia, Libya, and Yemen. Yemen के साथ तो है ना. Their people are taking a stand. Saudi Arabia and Iran have taken a stand, and they've been fighting for the past 10 years. Okay, so there's a problem. Okay, and Palestine के साथ problem is a long-term problem. Too much violence. If you see the Palestine history, that is why they are forced. After all, that entire land has seen wars and wars and wars. Always, it's a source of destabilization. That is why. That's about all. As per Scott Ritter, who's Scott Ritter? I don't even know who he is. USA lost the battle, both Ukraine. I look, anyone can take what these are all individual opinions. Who's won, who's lost. Okay, there's no one who's won, who lost at this point of time. So let's not. We don't know the political leaning of Scott Ritter. वो है कौन, करता क्या है ये? We don't know. Okay, is this Manipur issue settled? No, it has not settled. The violence has not stopped. It will restart one of these days, any day. There is some movement going on and peace talks and all that, but let us see what happens. We cancel contract with Qatar and Canada, and now of Venezuela and Guyana, things happens. It doesn't create problem. Yeah, it will create problems. Okay, we can't. We have not cancelled contracts with Qatar. Why should we? Why should we? In fact, I think we are on good terms with Qatar. Even with Canada, there are no contracts cancelled, so there's nothing. Venezuela, Guyana is an emerging problem which we have to be aware of. We already have contracts with Venezuela. We have good equations with Guyana. We should be clear as to how we are going to handle that situation which is coming up, and it is over the horizon. Why there is radicalization in Middle East but extreme peace in Gulf? Right? Look, you day before yesterday you was also there when Tahir Gora was speaking here. It is their religious way of life. They're not a violent way of life. It's only that people who are in troubled areas pick that religion and convert it into violence. That's the point. Why is there no violence in Iran? They also have a Shia kind of a thing, and it's not very, it's not very peaceful outside. Inside, it is peaceful. Why is all this Shia militancy violent and like Hezbollah or those chaps in Libya? So it is more politics. Politicization of Islam has led to this. Of course, Pakistan to chhod do, alag. After Pentagon claim of WMD in Iraq, can we ever trust USA when it tries to provide information about it? Who's asking you to trust USA? Trust but verify. There's no point in just blindly trusting anyone. You don't take them at face value. You verify. Anything they say, you verify. Okay? There's no problem in that.
Much of the information they give normally is backed by satellite photography or corroborated intelligence. And at some point of time, you need to trust for certain things. Okay. Uh, there are methods, we have established protocols to do that, so don't worry. This is not uh, that kind of an equation where they were trying to convince everyone to go to war because Iraq had WMD. They never showed the proof. Okay, but in normal exchange of intelligence, this won't happen. And number two is we also should be clear. What is that intelligence they are giving you? Is it in their interest or our interests or both interests? If it is in both their our interests, so we'll act on it. We know what their interests are or our interests are. Look, let me tell you, in international relations, when you sit hard across the board and talk across the table and talk, no one trusts anyone. We don't trust. I've dealt with the Americans. I've dealt with the Americans for about 10 years. I don't trust them. Equally, they also don't trust you. Let me be very honest with you. They also don't trust you. Why should they trust you? But what happens is when you deal on a particular issue, you develop confidence in each other as to how you'll behave. Your behavior patterns start emerging. Okay. Based on what you talk, how you record things, how you discuss, how you come to a conclusion, how you come to a via media, you come to understanding as to how this what this chap is. Uske baad, it's very easy to understand whether that fellow is lying or not lying. That's how it is. Can you make one episode on the topic where we were wrong, like in 10 years, India broken, Park? See, if I do all that, it'll be a negative talk. Okay, why we went wrong. What's the use? We have to see how to do things better. Okay, case by case. I'm not going to take a whole thing and say, oh, India went wrong everywhere. That's a negative way of doing things. We know where we have gone wrong in many issues. So we'll correct it, and our actions have to be suggestive of correcting the problem rather than just keep looking back. Remember, I keep telling everyone, you drive on the road using the windshield. You don't drive using the rear view mirror. Okay? Same thing. Okay? There is a rumor of underwater drone which Iran has. Yeah, let's see. Underwater drones have their own problems. I don't think anyone has developed a full underwater drone so far. Difficult to control the drone. Can you upload some of your talks given in various forums like IS? See, I can't upload that talk because I didn't get it recorded, and I certain things which I said there can't be uploaded, right? So I will not upload it, but I will repeat that talk in some other form. एक एपिसोड कर लेंगे उसके बारे में वो वही presentation duly edited. I will put it in open domain because what I speak to IAS Academy, because they're all government servants, is will be far different from what I speak with you people. Saudi's liberalization is temporary or long-term goodwill will come out of these actions? Okay, that's a fair question, but let me put it across in a different manner. Saudi Arabia knows it has limited quantity of oil. It is finite. I won't say limited, it is finite. One day it will run out of oil. It has to diversify. Where will it diversify? Its most trusted diversification destination is India. Okay. For us, we are going to be dependent on Saudi Arabia for a long time for our energy. They want food from you. So we have a mutual dependence. And that is how confidence starts. Yeah. Okay. Why are we agreeing ceasefire with Pakistan? See, again, Adil, ceasefire with Pakistan is a sensible thing. Otherwise, we would be just firing across with each other and trouble and all that. It's good for them, it's good for us.
it cools tempers down. Some infiltration will go on. Don't have a doubt about it. Certain things which we are doing also we'll do. I'll not tell you what we are doing. So these things go on at one level. At one level, that has to go on. In nations, these things happen, different things happen at different levels. It can't be one straight line. Okay, that's how it is. What's the issue of propagated torture of Kashmiris? Okay, by Indian Army. Let's see. We don't know the true thing. One video has come out of those three people who have died. We don't know the full story. There's a court of inquiry on, uh, and it's not correct for us to find out कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है भाई आएगा बताएंगे. Let's wait till then. What we need to do is see. Please understand one thing. I analyze things. I don't report news. So that is why when a thing happens, I don't immediately do a show. Many other, channels do a show. I don't do a show. मेरे को ऐसा आदत नहीं है क्योंकि I analyze and then I think over it and then I get an expert who knows that area or that particular thing. Then we talk as to why it happened, how it happened, and how we avoid it. I am not in the business of news. Sorry. Don't ask me such questions. Okay, provocative question. Why do political parties everywhere aim to appease minorities? Doesn't it make sense to appease majority and consolidate your votes from them? See, that is a political stunt which I have been seeing right from my birth. Everyone goes after a minority. It's either a minority community or a minority religion or a minority sect. Because these minorities tend to vote together. So that vote block mil jata hai aapko. Majority people might not listen to you. You might not have appeal to them. But if that minority is given some, you know, some inducement, they might vote. That's all. It's a very simple thing. All political parties are doing it. Do we have an advantage in Kailash range against China? Yes. After occupying Finger 4, why army withdrew? No, we have not withdrawn from that position. We have not withdrawn from Finger 4. We are still there. They have gone back to Finger 8. The area in between is something which is, no man's land. That's about all. Don't. Okay. Not sorry. We are at Finger 2. They're at Finger 4. They were at Finger 4. They have gone back. We were at Finger 4. We got back. Right. So Finger 4 is now part of that buffer zone. One day that buffer zone also will vanish. I'm very confident of that. In this Israel-Hamas conflict, where the fire is deceived by Hamas, or did they deliberately keep quiet? Look, Five Eyes has got nothing to do with Hamas, first and foremost. It is Israel who got deceived by Hamas. Five Eyes has got no role in with Hamas and Israel. So out of context is Shubham. What's the issue of propagated? I also told you this. Yeah. Yeah, moving our forces to LAC and Rajouri is a precautionary step. Lest Pakistan tries something. So you put your forces up front and say, if you want to try, we'll sort you out. That's about all. Transgender, no, I don't think we should. There's no question of transgender and woman participation beyond a point. I have explained this in detail in one of the first videos which I did on Israel-Hamas war. That woman can come in, not transgender, because transgender ke liye there's no provision so far. Okay. Women in the army, logistics and communication duties, they can do. Combat duties, no. That's my view. Why is Rajouri area commander not been removed yet? I thought he was at. Why should Rajouri area commander be removed? This accident happened near Punch.
So everyone is need not everyone in the channel need not be removed. Okay, so it's not in his area, the area of responsibility under the brigade, Poonch brigade, so that he is not removed. He's attached for an inquiry. Okay, someone else has been put in his place. He's been relieved of his command at this point of time legally. If that tomorrow the inquiry absolves him, he'll take over command somewhere else. It's not a big deal. These are standard things. Today, you guys are asking all these questions because this is the only incident. 5 years back, there were incidents like this every second day. At that time, who bothered? India purchasing Rafale and reducing the military budget. Yeah, no, no. We need Rafales. If you don't have Rafales, you don't have an air force. If you don't have a good air force, you have problems with China. Okay? Yeah. Can you please share some interesting stories from your heyday that you haven't shared in public? Someday I will, but I have been sharing once in a while. But I'm not a guy who wants to talk too much about myself on these issues. What is the punishment system for commanders? How many commanders were sacked for Kargil failure and they got promotion and swept on? No, a lot of people in Kargil got sacked. You do, I mean, people don't know. They were just not promoted thereafter. And then those people went and put in complaints and all that, and nothing happened. I've dealt with a few of those because at, when I was a colonel, I was dealing with some of these complaints which were coming after my command. So it is not as if people who don't measure up in the army, people who flout orders, or people who show operational cowardice and things like that, they're dealt very seriously. There's no doubt about it. Don't worry. We don't publicize it, but it happens. You talked about Saudi oil running. About what about US? Oh yeah, even they, everyone, the world is going to run out of oil one fine day. That is why energy as a domain of warfare is going to come up in the future, and that is where USA is far ahead of the curve. Why is USA far ahead of the curve? They are the only country in the world to have harnessed fusion reaction. No one else has come anywhere near it. And they've done it twice. They've demonstrated fusion reaction. Once fusion reaction you have harnessed and you got electricity, heat out of it, a fusion reactor, then oil has got complete no value. Look, let me give you something. Uh, Before oil was discovered, fossil fuel, the oil which was used was whale oil. Whaling was a huge enterprise activity. Whaling used to happen in the southern coast of America. There's this book called Moby Dick. Moby Dick is all about whaling. People used to go catch whales, slaughter them, get oil. And that oil used to be used for many things. But when oil was discovered, your fossil fuel based oil in Pennsylvania first, I think, somewhere, and then, of course, Saudi and many places around the same time, uh, that whaling operation completely failed. So this energy took off, and now this energy has lasted nearly 100 plus years, maybe not even 100, about 150 years. So if this goes off by the end of the century, by then technology would give you either fusion-based energy from which you need a special hydrogen isotope which you can get in Mars. That's why we're going to Mars. So you get that, make helium out of it, and then get fusion energy, and then technology will take its own thing. Then you use renewables, all that. Why do you think L1 that we have launched one towards to go towards the solar system? Basically to understand the reactions. So the space odyssey which we are undertaking is not just for fun. It's all about energy. Okay. Wouldn't you agree that lighting up LOC now, especially when Park is bankrupt under the pressure from TTP, would help squeeze them and cause them to crack it? Look, why are you getting so?
worried about Pakistan. Pakistan will not recover. We have blocked this side completely. That side is there in, they're up a creek without a paddle. Pakistan won't recover. You don't. Pakistan is a jelly state. It will not crack. That's what we discussed day before yesterday with Tahir Gora. The army is strong enough to ensure Pakistan doesn't break, but the army is not strong enough to run Pakistan. So it will remain like that. Why George Fernandez say Vietnam should be India's first priority? People laugh at that time. No, we never laughed. Those of us who knew what George Fernandez was talking. I've met him. I've dealt with him when I was just a lieutenant colonel and a colonel also. So no, I don't think so. Why was army sleeping during Kargil? Oh, this is too old. One day I'll do a show about Kargil and then we will. Right? What punishment were given to commander in Kargil? He was sacked. Brigadier Surinder Singh. Aaj tak he keeps going around all courts. Uh, India trying to balance between Israel and Palestine hasn't prevented us from getting attacked. So why is the government hesitant to join our prosperity? Is that a last resort of diplomacy fails? Yeah, that's something like that. You're on the right lines. I don't think our country will join in that in a hurry, but if we have to, we will. But we have not come to that level. We still have to keep our equations open with Iran and Russia. So, someone asked that question, why is our foreign minister gone there? That's how it is. Okay, what's the strategic importance of the Depsang plains that the PLA has refused to vacate it hitherto, and why have we allowed the LAC to move westward? No, no, it's not over the decades. It happened then, 56, 59. 62 was the last time that moved westwards. And it's been like that there. That Depsang Plain thing is only a little, hardly about 5-6 kilometers in depth. Our patrolling point on the other side of the junction point is just about 5-6 kilometers ahead. Okay. And their thing is 2 kilometers this side. That's about all. It's almost on the center. Why is Depsang Plain important? Is because Depsang Plain gives depth to China for the G219, which goes from Tibet to Xinjiang. If that is cut off, they're gone. That is why they don't want to give up Depsang Plain. It is their requirement. For us, Depsang Plain is important because if Depsang Plain is completely taken off, they're very clear near to the ranges behind. If that falls, then they can shake hands, and Siachen also falls, then they can shake hands with Pakistan. Though it's improbable, hoga nahi, but theoretically that's the reason. How long can Iran be the lone wolf after China stops funding? China will not stop funding. China will keep funding Iran because Iran is their guarantee for energy. Iran is their guarantee against tomorrow if things go bad in Afghanistan. Okay, so they'll not think. And Iran is their guarantee for their energy security through the Gulf. They'll not. That equation will have to tackle it differently. Your views on China's role in entire Hamas-Israel war? Ah, there's no. China is still running pillar to post. It's not fond of put anywhere. It's keeping its area dry and hoping like hell nothing happens where it doesn't get hit. So far, China has not made any diplomatic headway there, and the IMEC is not destabilized. China has nothing to do with it. The IMEC, the Israel part of it might not happen initially, but the India, Saudi Arabia, UAE part of it will continue. You don't have any doubts about it. Yeah. When is your book titled The Gunner Shot going to come out? That's a good question, Venki. I've started writing on the PLA. I've started writing a whole lot of articles on the PLA. If you notice, I'm getting it published wherever it is.
So I'm going to put that together and call it the gunner shot on PLA. It will happen maybe by the end of the year. I'm in no hurry. You talked about the PLA deployment around Tarain region of Nepal and attacking Gangetic plains. But can PLA handle the guerrilla warfare? Local population in that region is armed with desi weapons. Look, if PLA dumps money there, what happens? If they make good equations with Nepal, there will be no guerrilla warfare. The fact, what I'm trying to make out is, you have opened a new front if you don't handle Agnivir system properly, and you don't have Gorkhas from Nepal joining your army. You lost that link. That link you are willfully losing. Why should you lose it? Do you think Iran attacked ship near India? No, it was not Iran. It was Houthis. It was not a false flag operation. It was a deliberate operation by Houthis. And Iran could be giving us a signal. All this talk will go on now. Let us see. सर आईएसआई का कौन सा आला अफसर कश्मीर जिहाद को रिवाइव कर रहा है? इट बी आईएसआई हेड, और कौन कर सकता है? राइट? पाक फौज मुजाहिद बन के भर्ती जवान को शहीद करते हैं, या इसमें दो राय नहीं है कि आईएसआई ये सब कुछ कर रहा है. उनका डीजी आईएसआई होगा और कोई होगा डेस्क ऑफिसर जो कर रहा है, उससे क्या लेना देना. जो भी है वो एक्शन हमें ऑन ग्राउंड लेना पड़ेगा. People worry about Kashmir attack, doesn't even check. Asim Munir met Biden and Victoria Nuland this week. वो ठीक है, वो चलता रहेगा. वो कश्मीर अटैक के और असीम मुनीर का कोई लेना देना नहीं. Assam has a strong government. Mizoram recently elected local party. Tripura, Meghalaya, and Nagaland all have stable government. Yeah, when we talk about Northeast problem, we need to be specific, like Manipur riots. Yes, I agree with you. But equally, uh, the instability there is interconnected. Instability in Nagaland affects Tripura, not Tripura. It affects Nagaland, it affects Mizoram and Assam. Right, in Manipur, instability in Manipur affects Mizoram to the south, uh, Assam to the east, and Assam to the west, and Nagaland to the north, and also Tirappan Changlang into Arunachal, because uh, whatever happens in Mizoram, instability spills over into Myanmar and comes back to Arunachal. So that is how instability goes. All these governments are pretty stable at this point of time. I agree, but the population could go unstable. That's the issue. Why all of Myanmar citizens are in India? Not all of Myanmar citizens are in India. Sorry, Rohingya are here. Some will become because there is a problem there. अगर वहां लड़ाई हो रहा तो यहाँ आएंगे, यहाँ लड़ाई होगा तो वहां जाएंगे. ओके, यू शुड ऑल्सो एंटर म्यांमार. ये भाई आप लड़ने चल रहे हो क्या? आपको ये नहीं पता कि वहां होता क्या है? आप आप फौज भेज दोगे, वापस नहीं आएगा फौज. How important the BRICS will be in future? The BRICS will not be important. It will not be a game changer. Okay, it will not be a game changer till India comes out of it. If India comes out of it, BRICS is not BRICS. I understand Spain, France. Yeah, I told you earlier also, they don't want to be under a US-led alliance. They want an international coalition under a common framework or under the UN flag. That's why it is. Okay, I bow my head to you for answering each and every question so patiently. We are lucky. Oh, no problems. There's no issue at all, NRK. I believe in democratizing strategy because many of us don't understand the strategic issues. You think that generals live somewhere else and they don't talk to people and all. No, that is why I bring a lot of generals to talk.
then you understand that two things. One is we are also human being like you. We are not different. We are you. We are all Indians together. And second, you'll realize by now that all generals who come are thinkers. हम जनरल ऐसे नहीं बनते, उसके लिए बहुत पीसना पड़ता है, बहुत पापड़ बेलना पड़ता है, and you have to go through tough situations. So, and for me, it's a pleasure to deal with people because throughout my life, I've dealt with people, uh, you know, in CI ops and all, which is an unnatural way of dealing with people. And I'm not interested in being a politician, so I'm dealing with through this. Thanks a lot, Adil. I didn't see that. I didn't see that thing. Okay. Recent time, Maoist activity increases. What do you think? Yeah, Maoist activity will not go away in a hurry for the simple reason you call it Maoist, Naxalite, left wing extremism. Wherever there is poverty, there will be problems. That's about all. Which leader of USA is best suited for world, Trump or Biden? As far as I'm concerned, both are not the best choices for USA. Okay, you can choose. किसी को भी choose कर लो. As far as India is concerned, it doesn't matter much. Let me tell you whether it's Trump or Biden. But for USA itself, I don't think. I mean, it's a pity that USA is not able to throw up good politicians to lead them. Yeah. Thank you. Yeah, thanks a lot. Uh, it's my job. Sir, come tomorrow with homework on Taiwan. Yeah, yeah. Oh, I'm getting Namrata Hasija. She is a Taiwan expert. She's a young lady who keeps going to Taiwan. She spent half her time in Taiwan. She spends in a year, and she knows Taiwan politics very well. I have some fair idea about it because I've been interacting with people there. So we'll talk about it tomorrow. I've done a bit of research on Chinese cognitive warfare. We'll talk of it. During Balakot strikes, when Pak retaliated and off Swift retort, the target was Brigade Headquarters. Yeah, it was, but they couldn't hit. To ask you tough question, no problem. Vivek Ramaswamy, I don't think is fit. What is the future of European Union? It will continue. They don't have a choice. If they break apart, all these states will just wither away. So they will not break away. And they've developed it over a long time. So nothing, I don't see it breaking. Okay, does Quad hold importance? We saw USA. No, Quad is still very relevant. Shubham, because today you are thinking the action is this side, so you feel Quad is not action. कल के दिन वो खत्म हो जाएगा. साउथ चाइना सी और फिलीपींस के बीच में कुछ हो रहा है. चाइना और फिलीपींस के बीच में कुछ गड़बड़ होगा. So you will start going that side. So Quad will come into action. Don't worry. See, why was the brigadier moved in Rajori? See, Rajori ne Punch mein he was moved out. That is because there's an inquiry on. So when there's an inquiry on, he's taken out of command. That's about all. That's a standard procedure. It's nothing against him at this point of time. Chinese economy will shrink at some point of time. Russia and China, India will patch up. Will Iran have good relations? I don't see why we'll not have good relations with Iran. We've always had good relations with Iran. Okay, I would want to tell you that. Even now, our relations with Iran are not bad. So we just have to, put things in the right perspective. So I think we should give our diplomacy a fair chance. There's a lot of volatility in the Middle East politics. So we have to, okay. There are a few Padosi also come to watch your side. I don't know. I don't know who's this Padosi. If you want to tell me कौन सा पड़ोसी है बताइए. Some Padosis or Chinese chaps once used to come, but they have stopped coming these days. I don't know why. Why Pakistanis have been left out from Guardian? Pakistan, look, Pakistan is internationally marginalized. He's no more. Uh, no one is bothered about it. Why people are not bothered about Pakistan? People are not bothered about Pakistan because everyone knows that Pakistan doesn't have a future. What Tahir Gora said yesterday was very right about Pakistan.
Pakistan is going to be a pathetic, engineered democracy living in La La land, and all that is going to happen in February or March or whenever is going to be selections. There are no elections. And like he said, today's chap who's in jail will be tomorrow's prime minister. Tomorrow's prime minister will go back into jail. And this Ringa Ringa Roses will continue in Pakistan. That is what Pakistan is. Everyone knows it. It has lost its international relevance. As simple as that. Any predictions for that? Where he'll sell himself? What's the hurry? When will we have good relations with China? We'll never have good relations with China. Okay, let me tell you this, Adil. I'm going to do a talk in Madras Gymkhana in a couple of days on India's China challenge. So I'll repeat it next month, first week sometime, and then we'll see where we will go from this. South China Sea is important for China. No, I'll again explain why South China Sea is important for China. I'll explain to you when we talk of China. Come then. Any next talk of China, come. I will explain that to you on a map. You have to understand it in a map. Sam, just read well. Expand your knowledge and read. Be confident. The more knowledge you have, the more confident you are, and automatically SSB will be a song. No, it's not accountability. There's an incident which has happened. There are allegations which have come up in public. So the normal army protocol is to remove that person from the chair and institute an inquiry. That inquiry will go into details, and then based on the inquiry, the next action will be taken. That's a standard procedure. It is not for him, not against him. Many cases when the inquiry is finished and there's no this charges or whatever is there is unsubstantiated, or the right culprit is the one who's pinpointed, that culprit will be punished and this man will be let off. He is free. So I always felt I have got inquiries conducted against my subordinates against whom allegations were leveled. In many cases, I got even magisterial level inquiries conducted. So once that is over, end of story, he's back to normal. Usme kya hai? That's the way army functions, transparency. Right. I think I've exhausted everyone. Thanks a lot. Good evening. I enjoyed myself answering these questions. So tomorrow evening, again, I'm doing a different kind of a thing on Taiwan elections and cognitive warfare on Taiwan. I've written an article on it in the Financial Express. I did a lot of research. So we'll see tomorrow. Good evening and good night and Jai Hind.